Hello students, today let us study part 2 of heredity and evolution. In this part, we are going to study about Darwin's theory of natural selection, LAMARKISM, speciation and human evolution. Let us study first Darwin's theory. Charles Darwin had collected innumerable specimens of plants and animals, and here he had shown the theory of natural selection which preaches survival of fittest. He published a book entitled Origin of Species. According to him, all organisms they compete with each other and only those sustained shows modification essential for winning competition. Nature also selects only those organisms who are fit and rest are perished. तो जो सर्वाइव कर सकता है वो यहाँ सर्वाइव करेगा, आगे बढ़ेगा, और जो नहीं कर सकता है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली पेरिश्ड हो जाता है. एंड दीज गिव राइज टू न्यू स्पीशीज विथ ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स. Darwin's theory of natural selection was widely accepted. However, there are some objections which are raised. First one is that natural selection is not only the factor responsible for evolution. Second one is Darwin did not mention any explanation about the useful and useless modifications. Third is he had not explained about the slow and abrupt changes. Irrespective of all the objections this theory has raised, it is a major milestone in the field of evolution. Then comes the second theory, that is Lamarckism. Jean-Baptiste Lamarck proposed the principle of use and disuse of organ. He proposed that morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution. These changes are due to the activities or laziness of organisms. Now various examples are quoted. Long-necked giraffe is due to the browsing on the leaves of tall plant. They have extended their neck for several generations. इस तरह से अपने नेक को स्ट्रेस देते देते कई जनरेशन्स निकल गई और आज हमें लॉन्ग नेक जिराफ दिखता है. उसी के जैसे हमारे पास और भी कई एग्जाम्पल्स हैं. For example, the shoulder of iron smith, you can see here it has become very strong due to continuous hammering movement. Then wings of ostrich, emu, it has become weak due to no use. Wings है but वो fly नहीं करते हैं, so it has become weak. On the contrary, the legs of the swan and duck have become useful for swimming due to living in water. So they are not using it on the land, so they are using it for the paddling, and so it has become useful for swimming. In the same way, snakes have lost their legs due to modifications of burrowing habits. हमें अगर हम देखते हैं इनके एविडेंसेस तो हमें दिखता है कि yes they were having the legs बट उनको यूज़ ही नहीं किया गया और इसीलिए आज हमें विदाउट लेग्स वाले स्नेक्स दिखते हैं. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड आर ट्रांसफर्ड from one generation to another generation. So this theory is also called as theory of inheritance of acquired character or Lamarckism. However, there were some limitations. The first one is that development of organs due to activities or degenerations of organs due to no use was widely accepted, but transfer of these acquired characters from one generation to the other was rejected. कि yes वो organism acquired करता है according to the environmental character, but इन characters को transfer नहीं किया जाता है जो acquired होते हैं. कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, उसमें से एक फेमस था रैट्स के ऊपर में कि जो माइस होता है उनको टेल होती है, तो कई जनरेशन्स उस माइस की टेल काटी गई, बट टिल टुडे वी हैव नॉट गॉट द टेललेस माइस. सो इन दिस वे ये कुछ हमें पॉइंट्स देता है जो लैमार्किज्म के लिमिटेशंस में आता है. Second was that it was verified that modification broads are not transferred, and so this theory of Lamarck was disapproved. But
living organisms, they can transfer these acquired characters, and this theory is also called as ancestry of acquired characters. जब आप हायर क्लास में जाओगे तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे. So this is about Lamarckism. Then let us study the next subtopic, that is speciation. Speciation is that due to evolution, new species of plants and animals are formed. The group of organisms that can produce individual by natural reproduction is called species. आप देखोगे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये पहले कॉमन स्पीशीज थे, लेकिन फिर वो अलग अलग जगह माइग्रेट हो गए, एंड अकॉर्डिंग टू द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस विच आर प्रेजेंट देयर इन द सराउंडिंग, दे हैव गॉट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज. सो इस तरह से नए स्पीशीज तैयार हुए हैं. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम अर्लियर वन इज कॉल्ड स्पेशिएशन. इसे ही कहा जाता है स्पेशिएशन. Now each species has the special character. Each species differ in its geographical condition, food, habitat, reproductive abilities and period, etc. Therefore, specific characters are retained. And the speciation, it depends upon genetic variation, it depends upon geographic changes, also reproductive changes, and last is the geographical and reproductive isolation. इस तरह से आज हमें इतनी सारी स्पीशीज दिखती है. So this is how it has originated. Then let us study about the human evolution. हम ह्यूमन्स का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, आइए हम डिटेल में स्टडी करते हैं. वी ऑल नो लाइफ हैज़ इवॉल्व फ्रॉम अ सिंगल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. प्रोटोजोआ से हुआ है. अब 7 करोड़ साल पहले लास्ट डायनासोर डिसअपियर हो गए हमारे अर्थ में से, और मंकी लाइक एनिमल्स दे हैव इवॉल्व्ड विच आर नथिंग बट सिमिलर टू द मॉडर्न लेमर्स. अब 4 करोड़ साल पहले क्या हुआ, 10 ऑफ मंकी लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका डिसअपियर होने लगी. और क्या डेवलपमेंट होने लगा, तो उनका ब्रेन एनलार्ज होने लगा, उनके हाथ इम्प्रूव्ड होने लगे, एंड वी हैव गॉट एप लाइक एनिमल्स. नाउ दिस एप लाइक एनिमल्स दे रीच टू साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, and they are evolved as gibbon and orangutan, whereas the remaining of the ape, it stayed in Africa. Now 2.5 years ago गोरिल्ला और चिंपांजी, इनका इवोल्यूशन होने लगा. उसके बाद 2 करोड़ साल पहले एप्स दे इवॉल्व इन द डिफरेंट वेज. दे यूज़ देयर हैंड्स. आप देखोगे धीरे धीरे अब अपने हाथ यूज़ करने लगे खाने के लिए और बाकी के कामों के लिए. अब धीरे धीरे जो ये एप्स थे, आप देखोगे ज़मीन छोड़ के खड़े रहने लगे, बिकॉज दे स्टार्ट लिविंग इन द ड्राई एनवायरनमेंट ऑन द लैंड. इस तरह से उनका जो लंबर बोन था वो डेवलप्ड हो गया, एंड दे स्टार्टेड टू स्टैंड इरेक्ट. इस तरह से इरेक्ट पोस्चर के भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं. द फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल इज इवॉल्व्ड 2 करोड़ ईयर्स अगो. उसमें हमें जो मिलता है उसका नाम दिया गया है रामापिथेकस. सो रामापिथेकस इज सेड टू बी द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका. यहाँ से हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं. उसके बाद 40 लाख ईयर्स एगो द एप दे ग्रो इन साइज. आप देखोगे धीरे धीरे इनका साइज बढ़ता गया. They became more intelligent, and so the ape of South Africa evolved. उसके बाद क्या हुआ, 20 लाख साल पहले human like animals appeared and was like the member of the family genus Homo. और skilled humans तैयार होने लगे. आपको इनके हाथों में weapons दिख रहे हैं, तो अब धीरे धीरे weapons का डिस्कवरी होने लगा. 15 लाख साल पहले ह्यूमन वॉकिंग विद द इरेक्ट पोस्चर वेयर इवॉल्व्ड, एंड दे मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट्स. फिर क्या होने लगा, 1 लाख साल पहले
मैन हैज़ डिस्कवर्ड फायर। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, ब्रेन वॉज सफिशिएंटली इवॉल्व एंड इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मेंबर ऑफ क्लास वाइज मैन, यानी होमोसेपियन फैमिली में वो आने लगे। उसके बाद जो पहला एग्जाम्पल हमें दिखता है होमोसेपियन एनिमल का, इट वॉज द निएंडरथल मैन। तो निएंडरथल मैन जो दिख रहा है यहाँ पे, इट इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अ वाइज एनिमल। जो वाइज एनिमल्स हम कहते हैं वो इस तरह से यहाँ पे इवॉल्व होने लगे। उसके बाद क्या होने लगा, 50,000 साल पहले क्रो मैग्नॉन मैन इवॉल्व हुआ। उसके बाद हमारा इवोल्यूशन जो है वो बहुत फास्ट रेट में होने लगा और 10,000 साल पहले इंसान ने एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस शुरू कर दिया, कैटल हर्ड्स का रियरिंग शुरू कर दिया एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिटीज़, कल्चरल डेवलपमेंट ऑल्सो टुक प्लेस। उसके बाद क्या होने लगा, 5,000 साल के पहले राइटिंग वॉज इन्वेंटेड एंड हिस्ट्री स्टार्टेड। 400 साल पहले क्या हुआ, मॉडर्न साइंस एमर्ज हुआ और उसके बाद 200 साल पहले इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड नाउ टुडे वी हैव रीच टू द टुडे स्टेज, जहाँ बैठ के हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। So student, this is how the human evolution has taken place. The video itself explain you how difficult it was and how we are evolved from such a long tenure. और अब यहाँ पे ये डायग्राम्स आपको दिखाते हैं किस तरह से हम लोगों में ब्रेन का डेवलपमेंट होने लगा है। तो आप देखोगे साइज़ भी होने लगा और बहुत इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स तैयार होने लगे। सो इस तरह से हम लोगों का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। आई होप you must have understood the concept and you must have thoroughly gone through the topic. So hope so you have got it, and let us stop here. Thank you very much.